चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ आज आखिरी बार कानूनी पचड़ों को सुलझाते हुए दिखाई दिए। उनके आखिरी वर्किंग डे पर आज उन्होंने 45 मामले सुने। 370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, लगातार दूसरे दिन घर्षण। गुजरात में नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना, 6 लोगों ने 15 साल की नाबालिग से किया रेप। और वडोदरा में एयरटेल के मोबाइल टावर का विरोध, निवासियों को रेडिएशन का डर। धारा 370 बहाली को लेकर आज फिर एक बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी भाजपा नेता वॉकआउट कर गए। खुर्शीद अहमद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए जमानत पर रिहा किया गया था। सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में भी अब सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गुजरात के बनासकांठा के अंबाजी में 15 साल की नाबालिग पर 6 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है, जिसमें नाबालिग की माता ने अंबाजी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। इस मामले गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल ने मामले पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। पवित्र यात्राधाम अंबाजी खाते महिला ઉપર જે રીતે સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટનાના સમાચાર મળ્યા એ ખૂબ જ દુઃખદ છે, ખૂબ જ ગંભીર પણ છે। આજે આખા ગુજરાતની આંખોમાં રોષ છે, આખા ગુજરાતની આંખોમાં આજે આંસુ છે। આપે જોયું એમ કે જે રીતે છેલ્લા 2 મહિનામાં વડોદરા ખાતે મહિલા ઉપર દીકરી ઉપર સામૂહિક દુષ્કર્મ થાય છે, સુરતમાં દીકરી ઉપર દુષ્કર્મની ઘટના બને છે। દિવસે દિવસે ગુજરાતમાં એક પેટર્ન બની ગઈ છે દુષ્કર્મની ઘટનાઓની બનવાની, સાથે સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટનાઓ પણ જે રીતે વધી રહી છે એ ગુજરાત માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક વિષય છે। છેલ્લા 4 વર્ષના આંકડા જોતા ગુજરાતમાં 6524 જેટલા રેપની ઘટનાઓ થઈ છે અને 95 થી વધુ દુષ્કર્મની ઘટનાઓ બની છે, સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટનાઓ, જે ગુજરાત માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક વિષય છે। આજે તમે જો કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી હોય કે ગૃહમંત્રી શ્રી હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના CR પાટીલ સાહેબ હોય, તેઓને માત્ર ને માત્ર વાવ પેટા ચૂંટણી કેવી રીતે જીતાય એની ચિંતા કરવા માટે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જવા માટે સમય હોય છે, પરંતુ એમની પાસે મહિલા સુરક્ષાને કેવી રીતે મજબૂત કરવામાં આવે એની માટે વિચારવાનો કોઈ સમય નથી। એક પણ સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટના ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચાલી નથી રહી, જેના કારણે આ નરાધમોની ડેરિંગ દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે। તમે આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીને હું હાથ જોડીને એક આવેદન કરવા માંગુ છું કે જો તમે ગુજરાતની દીકરીઓને મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત ના કરી શકતા હો તો એમને વાહનના લાયસન્સની સાથે સાથે ઘરના પણ લાયસન્સ આપવાના ચાલુ કરી દો, તો ગુજરાતની દીકરીઓ અને મહિલાઓ પોતાની સુરક્ષા પોતાની જાતે કરી લેશે। આજે તમે જો કે બનાસકાંઠાની પોલીસ અને આખું આખું સરકારી તંત્ર જે રીતે વાવ પેટા ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। અને આ જ બનાસકાંઠામાં પવિત્ર ધામ અંબાજી ખાતે જ્યારે માં અંબેના પાવન ધરતી ઉપર આવી રીતે સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટના થતી હોય તો એ ગુજરાતની જનતા ક્યારે પણ સાખી નહીં લે।
કારણ કે ગુજરાતની મહિલા અને દીકરીઓને હવે ગુજરાત પોલીસ ઉપરથી, ગુજરાતના ગૃહમંત્રી ઉપરથી અને ગુજરાતની સરકાર ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. गुजरात के वडोदरा के प्रतापगंज इलाके के रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा के प्रतापगंज में पवनवीर अपार्टमेंट है। पवनवीर अपार्टमेंट से करीब 150 फीट की दूरी पर एयरटेल का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ के निवासियों को रेडिएशन समेत की दिक्कतों का डर सता रहा है। हमने जो ऑब्जेक्शन उठाया इस टावर के लिए, क्योंकि एक्चुअली जिसने ऑर्डर दिया है इस टावर के कंपनी को, उसमें उन्होंने कंडीशन कुछ डाली हैं कि जिस कंडीशन ऐसा होने पर उसको फ्री में उस टावर को शिफ्ट करना। उसकी एक कंडीशन है कि बिटवीन टू टावर्स 200 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक देखिए ये कंडीशन है, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पोल शुड नॉट बी लेस देन 200 मीटर, और ये 200 मीटर से कम है। दूसरा इसमें लिखा है कि यदि इन केस ऑफ अपोजिशन फ्रॉम एडजेसेंट प्रॉपर्टी ओनर्स आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि ये कंडीशन डाली है, पर करते क्या है कि जिसको पूछना चाहिए उसको पूछते नहीं, उससे छुपाते हैं, उसको बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि जब एकदम एडवांस हो पता चले। जबकि इन्होंने कंडीशन डाली, इसका मतलब वो जानते हैं। मामले की शिकायत वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष से की गई थी, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में यहाँ के लोगों ने काम रोककर विरोध प्रदर्शित किया है। આ પ્રતાપગંજ સોસાયટી છે, એમાં પવનવીર કહીને અપાર્ટમેન્ટ છે અમારું, અને લગભગ દિવાળી પહેલા ખોદવાનું ચાલુ કર્યું અને કોઈને ઇન્ફોર્મ કર્યા વગર કે ભાઈ અમે કેબલ લાઈન નાખવાના છે, એ હિસાબે એ લોકોએ ખોટે ખોટું બોલીને ચાલુ કર્યું. પછી અમને ખબર પડી કે ભાઈ અહીંયા ટાવર નાખવાના છે, પણ એની જોવા જાઓ તમારે ખાલી 20 મીટરમાં જ મારું પવનવીર અપાર્ટમેન્ટ આવે છે, જ્યાં હું રહેવાસી છું અને હું પોતે જ ત્રીજા માળે રહું છું. ત્રીજા માળે મને ડાયરેક્ટ આના વાઇબ્રેશન્સ ને એ અમને લોકો ત્રીજા ચોથા પાંચમા માળવાળાને મેક્સિમમ હેરાન થશે. સાથે સાથે આ ગ્રીન ઝોનમાં આવે છે, બરાબર, બધા તમે જોઈ શકો છો, બધા પેડ અને બધા છે વૃક્ષો, બરાબર, એ વૃક્ષોને બી નુકસાન કર્યું એ લોકોએ. પાણીની લાઈન કપાઈ તોડી નાખેલી એ લોકોએ. પછી તાત્કાલિકમાં એ લોકોએ આજે ને આજે એ લોકોએ તાત્કાલિકમાં ભરી, બરાબર, અમને લોકોને ઇન્ફોર્મ કર્યા વગર, અને અમારે સોસાયટીનું NOC લીધા વગર એ લોકોએ કામ ચાલુ કરી દીધેલું. અને એ લોકોને કહીએ કે વારંવાર રજૂઆત કરી કે ભાઈ અમે લોકો અહીંયા બધે VMCમાં ને બધે જ કમ્પ્લેન કરેલી છે, તમે काम ना करो, तो भी ये लोग वचमा काम करता था। हमारा जो घर है मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट है, उसके बिल्कुल 100-200 फीट में मोबाइल टावर के लिए सब काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि उसके रेडिएशन का क्या असर होता है ह्यूमन बींग्स पे, ऑर्गन्स पे, किसी को जो भी तकलीफ़ें हैं। वो रेडिएशन इतना नज़दीक है कि जो ऊपर के जो फ्लोर्स है, 3rd फ्लोर, उनको तो मतलब विंडो के बाहर ही टावर है। तो सारे बहुत ही कंसर्न हो रहा है, बहुत ही चिंताजनक ये चीज़ है कि इतना नज़दीक क्यों कर रहे हैं। तो हमारी विनंती है और आग्रह है जो भी ऑफिसर्स इंचार्ज है कि इतना नज़दीक रेसिडेंशियल किसी कॉम्प्लेक्स के एकदम बगल में प्लीज़ ना करें, कोई और जगह थोड़ा डिस्टेंस ढूंढ के करें, क्योंकि बहुत ही ये डेंजरस है इसका रेडिएशन, और बहुत ही नज़दीक है, मतलब विंडो खोलो और उसके बाहर टावर है एकदम। गुजरात के वडोदरा की स्थायी समिति में 2 कामों को मंजूरी दे दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 3 कामों को अनुमति के लिए रखा गया। इनमें से 2 कामों को मंजूर किया गया है। पूज्य दादा भगवान की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बैठक में चर्चा भी की गई। आज स्थायी समिति की बैठक में 3 प्रपोजलो चढ़ावવામાં આવી હતી, આમાંથી 2 મંજૂર કરી અને 1 મુલતવી રહી છે। ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 7 માં કાલેબગ પાણી ટાંકીથી મુખ્ય રસ્તા પર ડ્રેનેજ લાઇન પર જાસ્મીન મોબાઈલની સામે બંગાણ પડ્યું હતું। 773C હેઠળ 6,40,571 રૂપિયાનું જે કામ હતું એને જાણમાં લેવામાં આવ્યું છે। પૂજ્ય દાદા ભગવાન જન્મ જયંતિના આધ્યાત્મિક પ્રસંગ નિમિત્તે નવલખી ગ્રાઉન્ડ પર ફાયર એન્જિન અને 2 સ્ટાફ 24 કલાક માટે વિના મૂલ્યે ફાળવવાના હતા, એ કામને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। અને તાંજલજા તળાવ પર કબ્રસ્તાનની સામે જે કલવટ બનાવવાનું કામ હતું એને મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने शराबबंदी वाले गुजरात में नशाबंदी का कानून सिर्फ कागज पर होने पर
भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए हैं। સમગ્ર ગુજરાત માટે ચિંતાનો વિષય અને ભાજપાના શાસકોના ભ્રષ્ટાચારના પાપે ગુજરાતમાં નશાબંધીનો કાયદો કાગળ ઉપર ચાલી રહ્યો છે. કરોડો રૂપિયાનો દારૂ રોજ ચલવાય, 18,000 ગામમાં એવું એક પણ ગામ ન મળે જ્યાં દારૂ ન મળતો હોય એવું સરકાર પણ ન કહી શકે. એટલી હદે ભ્રષ્ટાચાર હપ્તાઘાતના કારણે દારૂની રેલમછેલ થઈને ભાવિ પેઢી બરબાદ થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં ગામથી લઈને ગાંધીનગર અને શહેરથી લઈને સચિવાલય સુધી ભ્રષ્ટાચારના પાપે ગુજરાતમાં જે રીતે દારૂનો વેપલો ચાલી રહ્યો છે અને એના જે કૌભાંડોને કાઢવામાં આવે છે એના કારણે નિષ્ઠાવાન પ્રમાણિક પોલીસ કર્મચારી અધિકારી શહીદ થાય એ પણ કેવી દશા આવે આપણે હમણાં જ તાજેતરમાં જોયું છે. અને બુટલેગરો બેફામ બન્યા છે. અસામાજિક તત્વો બેકાબુ રીતે પોતાનો મન ફાવે તેમ વેપલા ચલાવે છે અને તેમને કોઈનો ડર નથી. તેવા સંજોગોમાં સરકારની વારંવારની વાતો, સરકારની દાવા ચમરબંધીને છોડીને એની વચ્ચે હકીકત એ છે કે ગુજરાતમાં દારૂની નશાબંધીનો કાયદો કેટલો કાગળ ઉપર છે અને કઈ સ્થિતિ છે તેના માટેનું આ એક જાહેરનામું મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણી છે અને ચલાવે છે કોણ? તાપીની અંદર જાહેરનામું અધિક મેજિસ્ટ્રેટ બહાર પાડે છે કે ડ્રાય ડે રાખવામાં. આ ડ્રાય ડે એટલા માટે કે અધિક મેજિસ્ટ્રેટ વાસ્તવિકતા જાણે. તાપીની અંદર એક પણ પ્રકારનો સરકારી લીકર શોપ નથી, પરમિટ વાળાની કોઈ જગ્યા નથી, પણ જે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું એનાથી ભાજપની ભ્રષ્ટ શાસકોની પોલ જે છે એ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. હું આપના માધ્યમથી પૂછવા માંગુ છું ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રીને, કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો ની વાતો કરો છો. આ કાયદો કોના માટે છે અને આ ફાયદો ક્યાં બુટલેગરોને, ક્યાં અસામાજિક તત્વોને થઈ રહ્યો છે? કેના પાપે આ ગુજરાતમાં ખેલ ચાલી રહ્યો છે? કઈ રીતે હપ્તારાજ ચાલે જેના કારણે ગુજરાતનું યુવાધન વ્યસનની આગમાં ઠરવાય છે? જે ગુજરાતમાં દૂધના ટેન્કરો ફરતા હતા એ ગુજરાતમાં દારૂના ટેન્કરો કેમ હેરફેર થઈ રહી છે? આનો પણ જવાબ ભાજપાના ભ્રષ્ટ શાસકોએ હપ્તારાજના પાપે ગુજરાતમાં જે નશાબંધીનો કાયદો આવે અને એની હકીકત ખુલ્લું પાડવું આ જાહેરનામાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ગુજરાતની ભાજપાની સરકારમાં હપ્તારાજના કારણે દારૂની રેલમછેલ છે અને ગાંધી સરદારના ગુજરાતમાં दारू कायदो कागज ऊपर से ये फरी एक और साबित થઈ ગયું છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। फेस्टिवल में 2-3 किलो वेट तो पुट ऑन हो ही जाता है। टेंशन हो जाती है कि आखिरकार इसे कम कैसे करें। टेंशन नहीं, आसान है फैट कम करना। फेस्टिव फैट को कैसे घटाना है ये आप मेरे साथ देख सकते हैं VRM टीवी पर रविवार को 2 बजे। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु का सामान चोरी होने की वारदात सामने आई है। तीर्थधाम अंबाजी में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सूरत का एक परिवार भी शक्तिपीठ अंबाजी में दर्शन करने पहुंचा। ऐसे में अज्ञात बदमाशों ने परिवार की गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीयूष मेहता नामक शख्स अपने परिवार के साथ अंबाजी दर्शन करने आए। इस दौरान चोरों ने गाड़ी से 1.5 लाख रुपए नगद और 80 तोला सोने के जेवर की चोरी की, जिसके चलते डीवाईएसपी समेत पुलिस मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनूर के मालसर में नर्मदा किनारे गजानन आश्रम का भूमि पूजन किया गया है। मालसर में नर्मदा मैया के किनारे गजानन आश्रम बनाने की योजना प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री कुंवर जी बावलिया के हाथों किया गया। इस मौके पर करजन विधायक अक्षय पटेल समेत के जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। धोराजी के मुरली मनोहर मंदिर के महंत रविदास बापू समेत के महंत भी इस मौके पर उपस्थित रहे। करीब 50 करोड़ की लागत से लगभग 14,000 स्क्वायर फीट में गजानन आश्रम बनाया जाएगा, जिसमें नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। આજે માલસર ખાતે ગજાનંદ આશ્રમની અંદર ભૂમિપૂજનની અંદર અમારા ગુજરાત સરકારના માનનીય મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા અને તમામ અધિકારીગણ તેમજ આશ્રમને મહંતશ્રી ગુરુજી જાતે પણ એમાં જે ખાતમુહૂર્તની અંદર પધાર્યા અને આ ગજાનંદ આશ્રમ એવો એક આશ્રમ છે કે માલસર ખાતે હજારો લોકો અહીં આવે છે અને હજારો યુવકો સંસ્કૃત પાઠશાળાની અંદર મફતની અંદર અભ્યાસ કરી અને બહાર નીકળ્યા છે અને આવનારા દિવસોની અંદર હજારો બાળકોને સંસ્કૃતની અંદર ભણાવી અને એક વૈદિક બ્રાહ્મણો અહીં આગળથી ઉત્પન્ન કરી અને સમગ્ર વિશ્વની સૃષ્ટિ માટે અને વિશ્વની એકતા માટેના જે પાઠ અહીં બનાવવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રહિતની વાત કરવામાં આવે છે અને અહીંયા તમામ લોકોને ભોજન પણ મફત આપવામાં આવે છે, રહેવાની અને જમવાની સગવડ પણ મુક્તમાં છે। એવા સરસ મજાનો નર્મદા કિનારે આવેલા પવિત્ર આશ્રમની અંદર આજે સરસ મજાનું એક કાર્ય જે થઈ રહ્યું છે એને હું ધારાસભ્ય તરીકે હું આવકારું છું। ગજાનન આશ્રમ માલસર નર્મદાજીના પવિત્ર ખોળામાં છેલ્લા 16 વર્ષથી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરી રહી છે, તો હવે એ પ્રવૃત્તિઓને વિશ્વવ્યાપક કરવા માટે આજે ખાતમુહૂર્ત એટલે કે ભૂમિપૂજન હતું। હવે આવનાર સમયની અંદર વિશાળ પ્રમાણની અંદર આશ્રમનું નિર્માણ કરી અને તીર્થ તરીકે આપણે ડેવલપ કરવાનો એક અમારો સંકલ્પ છે કે માલસરને ભવ્ય તીર્થ બને। તીર્થ ક્ષેત્ર તો છે પણ હજારોની સંખ્યામાં નહીં લાખોની સંખ્યામાં લોકો આવે। નર્મદાજીનો વિશાળ ઘાટ હોય, ત્યાં રોજ આરતી થતી હોય અને રોજગારીના અનેક તકો માલસર અને આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર નિર્માણ બને એવું અમારું એક ભવ્ય આયોજન છે। લોકો ભાગવત કથા માટે, ધ્યાન, યોગ શિબિર માટે, ચિંતન શિબિરો માટે પણ લોકો અહીંયા માલસરની ભૂમિમાં પધારે એ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે।
અહીંયા સંસ્કૃત પાઠશાળાનું નિર્માણ થશે, ગૌશાળાનું નિર્માણ થશે, વૃદ્ધો માટેની રહેવાની સુંદર મજાની વ્યવસ્થાઓ હશે અને નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓની અવિરત સેવા થશે. આ રીતનું એક સુંદર મજાનું એક સંકુલ માલસરની અંદર निर्माण થઈ રહ્યું છે. એનો આજે ભૂમિપૂજન હતું. रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्म अजब रातनी गजब बात की स्टारकास्ट ने महसाणा में फिल्म का प्रमोशन किया। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। अलग अलग विषय के साथ फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम डॉक्टर जयेश पावरा ने फिर एक बार अजब रातनी गजब बात नामक रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा फिल्म बनाई है, जिसमें भाव्य गांधी और आरोही पटेल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट महसाणा पहुंची और महसाणा में फिल्म का भव्य प्रीमियर शो भी आयोजित किया गया। फिल्म का डायरेक्शन प्रेम गढ़वी और किल्लोल परमार ने किया है। फिल्म में यशवी मेहता, दीप वैद्य, आरजे हर्ष, आरजे राधिका, निसर्ग त्रिवेदी, मुरली पटेल, भरत ठक्कर भी एक्टिंग कर रहे हैं। एक ही रात में कुछ घंटे के भीतर जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। અજબ રાતની ગજબ વાત અમારી ફિલ્મ 15મી નવેમ્બરે રિલીઝ થવા જઈ રહી છે। એના પહેલા અમે અહીંયા મહેસાણામાં અમારા મેહાણી વાસીઓ જોડે આ ફિલ્મ જોવા આવ્યા છીએ અને બધાને કહેવા આવ્યા છે કે અમારી ફિલ્મ જે અમારા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ છે એ લોકોને કહેવા આવ્યા છે કે અમારી ફિલ્મ જુઓ, આ ફિલ્મને માણો અને વધારેમાં વધારે લોકો સુધી પહોંચાડો। કારણ કે ગુજરાત છે, ગુજરાતમાં ગુજરાતી ફિલ્મો ચાલવી જ જોઈએ અને બધા શહેરોમાં ચાલવી જોઈએ। થિયેટરમાં જઈને આ ફિલ્મ માણજો, પરિવાર જોડે માણજો, મિત્રો સાથે માણજો અને બધાને મજા આવશે। અને પહેલો દિવસ છે પ્રીમિયરનો અને બીજો શો છે અને તમારા બધાનો જ રિએક્શન એ અમારી માટે રિએક્શન છે। તમને કેવી લાગે છે અમને આખી પિક્ચર જોયા પછી કહેજો। બહુ જ મજા આવે છે, તમારા લોકોના રિસ્પોન્સ જોઈને વધારે મજા આવી રહી છે। લોકો બહુ જ એન્જોય કરી રહ્યા છે અને એક અભિનેત્રી તરીકે તો કહેવાય ને કે ડ્રીમ રોલ છે, કારણ કે ઘણા બધા મેસેજીસ એઝ અ વુમન પણ આપવામાં આવ્યા છે કે છોકરીઓ તરફથી પણ બોલવામાં એક મારો વોઇસ છે આમાં એ થયેલો છે એટલે મને બહુ સારું લાગે। ફિલ્મનો ડાયલોગ તો મને એક બહુ જ ગમે છે, એ છે કે કોઈના કહેવાથી જો રિલેશનશિપ તૂટી જાય તો એને રિલેશનશિપ પર ના કહેવાય। ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રોડક્શન મારું છેલ્લા 2-3 વર્ષથી ચાલે છે। તે દરમિયાન મેં 3 થી 4 ફિલ્મો જાતે બનાવડાવી છે અને એક ફિલ્મમાં હું એઝ એ ઇન્વેસ્ટર પણ હતો। ધુઆધાર, હું તારી હીર, કહી દેને પ્રેમ છે અને કસુમ। આ ફિલ્મ અમે એકલા હાથે એટલા માટે બનાવવાની ફ્રોમ સ્ક્રેચથી અમે ચાલુ કરીને આ બધામાં ઇન્વોલ્વ થયો હતો। એના કાસ્ટિંગથી માંડીને એના પ્રોડક્શનમાં એક જગ્યાએ હું હાજર રહ્યો હતો, કારણ કે મારે એક આ સ્ટોરી સાંભળ્યા પછી પ્રેમ ગઢવી અને નિકિતા અને આદિત્યએ જે સ્ટોરી સંભળાઈ ત્યાંથી મને એમ થયું હતું કે આ સ્ટોરી લોકો સુધી 100% પહોંચવી જોઈએ। પણ એ પહોંચાડવા માટે, કારણ કે એની અંદર જે એક મેસેજ છે એને એવું એન્ટરટેનમેન્ટથી પહોંચાડવી જોઈએ કે જેથી લોકો એને હસતા હસતા એક સારો મેસેજ લઈ જાય અને આની અંદર એક પળમાં તમને એટલું હસવું આવશે, તમને એટલું મજા આવશે, એટલી એન્ટરટેનમેન્ટ થશે। આમ પણ કહેવાય છે કે ફિલ્મો એટલે 3 જ વસ્તુ, એન્ટરટેનમેન્ટ, એન્ટરટેનમેન્ટ અને એન્ટરટેનમેન્ટ। बहुत सरस अजब रात ની ગજબ વાતો। એક ટપ્પુને તો પહેલા નાનપણથી જોતા રહ્યા, પણ અત્યારે આખો અલગ જ એનો લુક બહાર જે હીરો તરીકે પહેલી વાર અમે જોઈ, બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે અને પિક્ચર એકદમ જબરજસ્ત મજા આવે એવું છે। અમે આ પ્રીમિયરમાં જોઈ ગયા, અમને એવું લાગ્યું કે કંઈક નવું જાણવા મળ્યું ગુજરાતી પિક્ચરમાં। આવું સ્ટોરી, જે લવ સ્ટોરી કેવી રીતે બ્રેકઅપ થાય, શું થાય અને સાચો લવ કોઈ કેવી રીતે કરી શકે એ કંઈ ખ્યાલ આવે એવું જ નથી આમાં। એમાં જે ટપ્પુનું પાત્ર છે કેજીએફ તરીકે જે અમે આપ્યું, બહુ જબરજસ્ત। गुजरात के सूरत में अचानक ऐसी घटना घटी कि एक के बाद एक महिलाएं बेहोश हो गईं। सूरत के झापा बाजार देवड़ी के पीछे नूरपुरा के बेसमेंट के हॉल में ऑक्सीजन का प्रमाण घट जाने से 20 से ज्यादा महिलाओं के बेहोश हो जाने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया। दरअसल दाऊदी बोहरा समाज के रात्रि भोज के लिए एसी हॉल में नॉनवेज सिजलर बनाया गया था, लेकिन ऑक्सीजन कम पड़ जाने से 20 से 30 महिलाएं एक के बाद एक बेहोश होने लगी, जिससे बुरहानी अस्पताल की एम्बुलेंस से पूरा इलाका गूंज उठा। यहाँ हॉल में
एक टन के 4 से 5 एसी होने के साथ साथ सिजलर का धुआं बेसमेंट के हॉल में भर जाने से ऑक्सीजन लेवल घट गया और खाना खाते खाते ही 20 से ज्यादा महिलाएं बेहोश हो गईं। उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। વિઝિટમાં તો એવું છે કે અમારા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી ડોક્ટર ઉમરીકર સાહેબ અને અમારા નાયબ આરોગ્ય અધિકારી શ્રી સેન્ટ્રલ ઝોન ડોક્ટર કેતન ગરાસિયા સાહેબ તરફથી સૂચના મળી કે આવું કંઈક થયું છે, તપાસ કરો. તે તપાસ અર્થે અમે અહીંયા આવ્યા છે. અમે અહીંયા જોયું છે કે આ હોલમાં સફોકેશન થાય એવું છે, વેન્ટિલેશનની કોઈ વ્યવસ્થા દેખાતી નથી અહીંયા અને એવું જાણવા મળે છે કે 30 થી 35 બહેરાઓ બેભાન થઈ ગયા હતા કે સિલિન્ડર પીરસવામાં આવ્યું છે એવું અમારી જાણમાં અહીંયા આવેલું છે. ના, વેન્ટિલેશનની તો કોઈ સુવિધા નથી, કોઈ જગ્યાએ વેન્ટિલેશન દેખાતું. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ आज आखिरी बार कानूनी पचड़ों को सुलझाते हुए दिखाई दिए। उनके आखिरी वर्किंग डे पर आज उन्होंने 45 मामले सुने। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे रहा। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई। इसमें उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, वरिष्ठ वकीलों के अलावा 10 नवंबर से सीजेआई का पद संभालने वाले जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए। जस्टिस खन्ना देश के 91वें सीजेआई होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को बतौर सिटिंग जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में सीजेआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की। सीजेआई चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन, मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता और CAA NRC जैसे फैसले शामिल हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે LED ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. ઓર કોલ 982533 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium.
3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का महापर्व वडोदरा में भी भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न करवाया गया। गुजरात के वडोदरा के सोमा तालाब पर विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग वाणी प्रखंड और छठ पूजा समिति कृष्णा नगर विजयवाड़ी द्वारा छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भगवान सूर्य देव की सामूहिक आरती अल्पाहार समेत के आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय शामिल हुए। कई राज्यों में छठ पूजा का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है, जिसका आयोजन वडोदरा में भी उत्तर भारतीय संगठनों द्वारा किया जाता है। इसी के तहत सोमा तालाब पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। छठ पूजा समिति द्वारा कृष्णा नगर विजयवाड़ी में आज रोज छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में हिंदू समाज ने हाजिरी दी और साथ साथ में सूर्योदय भगवान की महाआरती का भी आयोजन किया और उसके साथ अल्प आहार सभी के लिए का भी आयोजन किया। इसमें विशेष उपस्थिति में संत श्री का आशीर्वचन प्राप्त हुआ, जिसमें गोइल सीता माता, गोइल गणपत सिंह विदेशी सेवक, 64 जोगनीश माता सेवा ट्रस्ट दशामा मठ और परम पूज्य श्री वल्लभ भाई एवं वाघेला महाराज, परम पूज्य श्री कंचन भाई के सोलंकी महाराज की उपस्थिति रही और साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद वाणी प्रखंड के अधिकारीगण का सेवक की हाजिरी रही। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ साथ अब देश भर में घमासान मचता हुआ सा नजर आ रहा है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री CR पाटिल ने पत्रकार परिषद में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस जो બંધારણની વાત કરે છે એ બંધારણને તોડવું મરોડવું એ એનો ગમતો વિષય છે અને નેશનલ કોન્ફરન્સ આપણે પહેલીવાર વિધાનસભામાં બંધારણના આધારે મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીઓએ શપથ લીધા અને વિધાનસભામાં પહેલું કામ એ જ બંધારણના લીધેલા નિર્ણય, બંધારણના આધારે સંસદમાં લીધેલા નિર્ણયને તોડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસ જે એમના નેતા હાથમાં બંધારણની કોપી લઈને ફરે છે એ એમને નેશનલ કોન્ફરન્સને સપોર્ટ કરે છે। 370ની કલમ રદ કરવા માટે અને 35ની કલમ રદ કરતી વખતે સંસદમાં સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે ખૂબ ચર્ચા વિચારણાને અંતે લેવાયેલા નિર્ણયને અવગણવાનો પ્રયત્ન કોંગ્રેસ અને MC બંને મળીને કરી રહ્યા છે। 370ની કલમ રદ થવાથી ફક્ત દેશમાં નહીં પરંતુ જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને પણ એમ લાગે છે કે કાશ્મીરમાં એમને ખરા અર્થમાં સ્વતંત્રતા મળી છે। 370ની કલમ હોવાને કારણે દીકરીઓ જો અન્ય જગ્યાએ લગ્ન કરે તો એમને પ્રોપર્ટીમાંથી, પિતાના પ્રોપર્ટીમાંથી એમને જે ભાગ મળવો જોઈએ, એમને જે હિસ્સો મળવો જોઈએ એ મળતો નહોતો। દલિત સમાજ અને આદિવાસી સમાજના જે ભાઈ બહેનો જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે એમને પણ કોઈ રિઝર્વેશનનો લાભ મળતો નહોતો, એમના અધિકાર છીનવી લેવામાં આવ્યા હતા। 370ની કલમ રદ કરવાને કારણે આદિવાસી સમાજ હશે, લઘુમતી સમાજ, દલિત સમાજ કે બહેનો
આ દરેકને પોતાના અધિકારો પ્રાપ્ત થયા છે કે જે આ દેશમાં જે અધિકારો છે એ દરેકને મળવા જોઈએ. જે કાશ્મીરને મળતા નહોતા એમને કાશ્મીરના લોકોને પણ મળતા થયા છે. 370ની કલમ રદ કર્યા પછી અમે જોયું હશે કે આતંકવાદી હુમલાઓમાં પણ લગભગ 70%નો ઘટાડો થયો છે કે ત્યાંના લોકોને પણ હવે મુક્તિ મળવાને કારણે એ પણ ખુલીને બહાર આવતા થયા છે અને આતંકવાદને બદલે એ દેશના વિકાસમાં સાથે જોડાઈને એ આગળ વધવા માંગે છે. એક ચૂંટાયેલી સરકાર રાજ્યમાં વિકાસના કામોને અગ્રિમતા આપવાને બદલે પહેલું કામ સંસદ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને તોડવાનો પ્રયત્ન કરે, એમાં કોંગ્રેસને સપોર્ટ કરે. મારે આપના માધ્યમથી કોંગ્રેસના નેતાઓને પણ પૂછ્યું છે કે ક્યાં છે આપણી બંધારણ પ્રત્યેની વફાદારી, ક્યાં છે? બંધારણ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ આદિવાસી ભાઈ બહેનો અને દલિત ભાઈ બહેનો કે મુસ્લિમ દીકરીઓને મળેલા અધિકારનું રક્ષણ કરવામાં તમને વાતો શું છે? તમે કેમ એમના અધિકાર છીની લેવા માંગો છો? આનો જવાબ એમણે આ દેશને આપવો પડશે, એ તો આ દેશના લોકો એમને જવાબ આપશે એવો મને વિશ્વાસ છે. હું આપના માધ્યમથી ફરીથી સૌ ભાઈ બહેનોને વિનંતી કરું છું કે કોંગ્રેસનો અને નેશનલ કોંગ્રેસનો અસલી ચહેરો એ આજે આપણે સામે જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ એમના ગમે એટલા ધમપછાડા હશે, ગમે એટલા પ્રયત્ન હશે, ગમે એટલી એમની મેલી મુરાદ હશે, પરંતુ એ પૂરી થવાની નથી. 370ની કલમ જે રદ થઈ છે, જેને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ માન્યતા આપી છે, એ ચોક્કસપણે એ રહેશે અને કોઈ હટાવી નહીં શકે, એનો પણ આપણે હું વિશ્વાસ આપું છું. धन्यवाद. आज देश भर में 225वीं जलाराम जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में पौराणिक जलाराम मंदिर है, जहां जलाराम बापा की 225वीं जन्म जयंती उत्साह के साथ मनाई गई. इस मौके पर भक्तों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें महाप्रसाद और पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित हुए. सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त जलाराम बापा का दर्शन करने पहुंचे और धन्यता का अनुभव किया. डभोई के एसटी डिपो निकट के इस पौराणिक जलाराम मंदिर में जलाराम बापा की 225वीं जन्म जयंती पर पादुका पूजन समेत के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. વીરપુર ધામના જે જલારામ બાપાના મંદિર આજે આખા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ધામધૂમથી જે જલારામ બાપાની જયંતિ ઉજવાઈ રહી છે, એની અંદર ભાવિક ભક્તો પબ્લિક ઉમટી રહ્યા છે. એમાં સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કોઈ સ્થળ એવું બાકી નથી કે જલા બાપાની જન્મ જયંતિ ઉજવાય નહીં. અને આજે આપણા ડભોઈ શહેરની અંદર એક ડભોઈ ડેપોની સામે જે જલારામ મંદિર આવેલ છે, ત્યાં પણ ભાવિક ભક્તો બધા એક જલારામ જયંતિ ઉજવવા માટે અને બધાએ સાથ સહકાર આપી અને જલારામ જયંતિનો વાહ વાહ કર્યો છે. એની અંદર બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ કે પ્રસાદીનો જે સમય છે, પ્રસાદી લે અવશ્ય પધારો. અને હરેક પ્રસંગની અંદર આ બધાએ ડભોઈના જે સમગ્ર બધાએ આખા ગુજરાતના જે કહેવાય એમાં બધાએ આમંત્રિત થઈ અને પધારી અને બધાએ સાથ સહકાર આપી અને આ જલારામ જયંતિ ઉજવવાનો આપણે બધાએ એક સંગઠન કરી અને આ કાર્યક્રમને આપણે સફળતા માનીએ અને ચલો બાપો માથે હાથ મૂકે આપણા બધાના દુઃખ દરિદ્ર દૂર કરે, એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. જય જલારામ. उत्तर भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा भावनगर के गौरी शंकर तालाब में उत्साह के साथ मनाया गया. भारत के अन्य राज्यों की तरह अब गुजरात में भी छठ पूजा भक्ति भाव से की जाती है. भावनगर के गौरी शंकर तालाब पर आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा भक्ति भाव के साथ मनाया गया. सूर्य की पूजा का ये उत्सव विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में रहने वाले लोग मनाते आए हैं, जिसमें 4 दिनों का व्रत किया जाता है और पवित्रता के साथ इन सभी दिनों में विशेष प्रसाद खाकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देकर सुख और समृद्धि की मंगल कामना की जाती है. भावनगर के गौरी शंकर तालाब पर भी छठ पूजा के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े.
मुख्य कारण है छठ पूजा है ना, वो अपने बच्चे के लिए लोग करता है छठ पूजा। सूर्यदेव के लिए, अपने बच्चे के लिए करता है, अपने पति के लिए लोग रखता है, उपवास रखता है, 2 दिन उपवास रखता है, पानी वानी कुछ पीता नहीं है। छठ पूजा का महत्व हम लोग का ये है, बराबर। हम लोग इसके लिए छठ पूजा, हम लोग सबसे ज़्यादा त्यौहार हम लोग छठ पूजा ही है, सबसे बड़ा से बड़ा त्यौहार छठ पूजा हम लोग का। भावनगर में छठ पूजा करने वाला 2 लाख आदमी है यहाँ पर। हम लोग का मांगनी यही है कि सरकार अगर घाट बना दी एक जगह 2 लाख आदमी के लिए, तो हम लोग अगले साल इससे ज़्यादा छठ पूजा करने के लिए उत्साह मनाएंगे। हम लोग बहुत बेकार हालत थी, हम लोग अपने पैसा से JCB मंगाए, साफ करवाए, सब हम लोग करते हैं। मांडवा भी हम लोग डालते हैं। चलिए तो मांडवा तो हम लोग डाल सकते हैं, छठ पूजा हम लोग है, लेकिन सफाई करवाने के लिए म्यूनसिपालिटी वालों को ध्यान तो देना चाहिए ना। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के मार्केट यार्ड में कपास की खुली नीलामी का आज से प्रारंभ हुआ है। बोडेली APMC में हर साल लाभ पंचमी के दिन से कपास की खरीदारी शुरू की जाती है, लेकिन इस वर्ष ज्यादा बारिश की वजह से कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और कपास के उत्पादन में भी देरी हुई है। ऐसे में आज जलाराम जयंती के दिन से किसानों द्वारा कपास की खरीदारी शुरू की गई है। 3 वाहनों में किसान कपास लेकर APMC पहुंचे और यहां खुली नीलामी का प्रारंभ बाजार समिति के अध्यक्ष वालजी बारिया के हाथों पूजा कर करवाया गया। आज से शुरू हुई कपास की नीलामी में 1 क्विंटल कपास का दाम 7,200 से 7,575 रुपए रहा। गाम जापाती आज कपास लेने मार्केट में आया छे। अमारो भाव 75 નો ભાવ પડ્યો છે, તો ભાવ તો માર્કેટમાં સારો પડ્યો તે બી પણ અમને પોસાયું લાગતું નથી। અમાર કમ સે કમ 10,000 નો ભાવ મળતો હોય કપાસમાં તો પોસાયું છે। મજૂરી બધી ખાતરનો ભાવ, બિયારણનો, દવાનો બધો ભાવ વધી ગયો છે। તો સરકારને વિનંતી છે કે 10,000 સુધીનો ભાવ મળે એવું કંઈક કરે અને અમારા ગામમાં જે પેલું ધોવાણ થયું એનું કંઈ સહાયનું પેકેજ બી મળ્યું નહીં, તો સરકારને બી વિનંતી છે કે અમારા ગામે પેકેજ બહાર પાડે। આજથી બોડેલી માર્કેટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આજે માર્કેટમાં 3 સાધન હરાજીના આવેલ છે, જેમાં ભાવ 72 રૂપિયા માંડી 75 સુધીનો ભાવ પડેલ છે અને આજે જે શરૂઆત કરી છે એમાં હાઈએસ્ટ ભાવ 75 થી 75 સુધી પડેલ છે। દરેક ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી છે કે આજથી ખેતીવાડી માર્કેટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને એ માર્કેટમાં કોઈને પણ ફરિયાદ હોય તો APMCની ઓફિસ દરવાજા અગાડી ફરિયાદ પેટી પણ મૂકવામાં આવી છે। गुजरात के सूरत में लाजपुर जेल में बीमार कैदी की मौत का मामला सामने आया है। सूरत जिले की लाजपुर मध्यस्थ जेल में एक बीमार कैदी की मौत हुई है। 45 वर्षीय रतिलाल बदा को 25 दिनों पहले वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 25 दिनों से जेल में बंद रतिलाल नामक कैदी की तबीयत खराब होने पर उसे सूरत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत पर सवाल उठे हैं। मृत्यु होने वाले मेरे काका थे, उनका नाम रतिलाल सूरितराम बधाने है। उनकी उम्र 45 साल है। उनकी एक 7 साल की लड़की है और उनकी वाइफ है। पूरे घटना ऐसा ही चोरी के केस में उठा के लेके गए। गुना ऐसा है, वो ऑटो चलाते थे किसी का, तो ऑटो वाले के पास गए नहीं, तो ऑटो वाले ने कुछ फरियाद लिखवा दी थी। तो फरियाद के चक्कर में पहले पापा को उठा लिया। पापा को उठाने के बाद में पापा को 12 घंटा अंदर रखा। तो पापा को कहते थे उसे ले आओ, पापा को छोड़ेंगे तो उसे ले आएंगे ना। तो फिर दूसरे किसी आदमी से हमने बात करवाई, पापा को छुड़वा लिया। फिर पापा ने उनको बता दिया काका इधर इधर सोया है, काका को उनने उठा लिया और हमारे पापा को छोड़ दिया। मृत्यु का मैं कल धुलिया गांव में था। मेरे को 10 साढ़े 10 बजे मेरे को फोन आया कि रतिलाल सूरितराम बधाने कौन है। हमने बोला कि हमारे चाचा है। तो बोले वो एक्सपायर हो गए। इधर से ही सूरत से किसी का नंबर आया था, हमें फोन किया था। इसमें ऐसा लगता है अभी जेल में अंदर डाले तो कैसे क्या मर गए, ऐसा हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि उनको बीमारी थी क्या नहीं थी। इसमें हमें ऐसा लगता है अभी वो बच्ची का क्या होएगा, बीबी का क्या होएगा। वो तो चले गए, 7 साल की लड़की है, क्या करेगी वो, उसकी उम्र अभी 7 ही साल है, तो कैसे जगेंगे वो दोनों के दोनों। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल बटेंगे तो कटेंगे के साथ गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजित गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। चुनाव के समय पार्टियां अपने कामकाज का हिसाब देकर जनता के बीच जाती है। बीजेपी और महायुति भी लगातार अपने काम का हिसाब दे रही है, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास एक ही तरीका है। कांग्रेस उसके साथियों की झूठ की दुकान, यही दुकान इन दिनों कांग्रेस और उसके चेलों ने महाराष्ट्र में लगाई है। कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में भी यही झूठ की दुकान सजाई थी, और वहां क्या हाल हुआ? चुनाव खत्म हुए, दुकान का शटर गिर गया। वादे पूरा करना तो दूर, कांग्रेस शासित राज्यों में हाल ये है कि सरकार चलाने के पैसे इनके पास नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। खर्चों के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जनता से वसूली हो रही है। जनता भी इनकी असलियत जान गई है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, वहीं दूसरी तरफ महाअगाड़ी का घोटाला पत्र है। क्योंकि ये पक्का है, जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे वहां घोटाला होगा ही होगा। ये लोग ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। आप महाराष्ट्र में इन लोगों को ये सारा पाप फिर से करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? ये धोखेबाजी महाराष्ट्र की जनता के बीच चलेगी क्या? पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेसी नेताओं से बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवाकर दिखाएं। 50 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ साजिश है। सातवें चुनाव एक और महाराष्ट्र के भविष्य का चुनाव है, साथ ही ये महाराष्ट्र के सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव भी है। एक और बीजेपी और महायुति है, जिसके लिए मराठी संस्कृति और इतिहास ये हमारी आस्था के केंद्र है। हमारी केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हमने मराठी को वो पहचान दी, ये महान भाषा जिसकी पहले से हकदार है।
हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की बात की, उनके सम्मान को आगे बढ़ाया। बीजेपी गर्व से कहती है कि वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत है। वीर सावरकर महाराष्ट्र और राष्ट्र के गौरव है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और उसके पीछे लगे महाआघाड़ी के लोग, आप इनकी सोच और मानसिकता देखिए। कांग्रेस ने कभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं मिलने दिया। कांग्रेस के लोग घूम घूम कर वीर सावरकर को गाली देते हैं, कांग्रेस के नेता गाली देते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आकर के वीर सावरकर का अपमान करते हैं। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र के अघाड़ी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के युवराज को बिठाया, उसको कहा भाई महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है, तुम वीर सावरकर को अभी गाली देना कुछ दिन बंद करो। उसके मुंह पे ताला लगाया, गाली बोलना बंद करो। और ये देखिए अघाड़ी वाले, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सावरकर की विरासत का दम भरने वाले आज अघाड़ी में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। मैं कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये चुनौती मेरी महाअघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर सावरकर की काले पानी के दिन, काल कोठी में बताए उनका वो कठिनतम समय और देश की आजादी के लिए लिया हुआ प्राण। कांग्रेस सब कुछ खारिज करती है। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से वीर सावरकर के काले पानी वाले दिनों की जरा प्रशंसा करके दिखाए। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर ने कितने ही क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से ऐसे प्रेरणादायी वीर सावरकर की तारीफ करवाकर जरा दिखाए। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी, उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। आज 8 नवंबर है, मैं दिन गिनूंगा और महाआघाड़ी वालों से जवाब का इंतजार करूंगा। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के सूरत में फिर एक बार ड्रग्स पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 43.96 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स पकड़ा है। मामले के आरोपी शाहिद कनेर और कृणाल पटेल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। सूरत सिटी के अन्वय सूरत पुलिस लगातार ड्रग्स के पीछे एक मुहिम चला रही है और ड्रग्स नाबूदी के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर केआई मोदी और पीएसआई सिंधा को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वेड रोड का शाहिद उर्फे दानिश, मोहिउद्दीन शेख और कुणाल पटेल
जो रांदेर का रहने वाला, और ये दोनों काफी ऑफेंसों में पहले पकड़े जा चुके हैं और नोटरियस है। ये मुंबई से ड्रग्स लाके यहाँ सूरत में कतारगाम, वेल्ड रोड और रांदेर में बेच रहे। इस इन्फॉर्मेशन में कल उनको एक फर्दर लीड मिली कि ये लोग कल मुंबई से एनडीपीएस का एमडी लेके आ रहे हैं और सूरत में बेचने वाले। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे दो अलग अलग पीआई जैन गोस्वामी और पीआई केआई मोदी ने इन पे वॉच रखी थी और कापोद्रा 4 रास्ता पे इसको पकड़ा गया, जिसमें करीबन इसके पास 44 ग्राम जितना एमडी ड्रग्स मिला था। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है, 4.5 लाख रुपए का मुद्दामाल सीज किया गया है और आगे की कार्यवाही चालू है। शाहिद और कुणाल के खिलाफ मर्डर, मोबाइल स्नैचिंग, पासा, जेल में काफी भी ऑफेंस रजिस्टर हो चुके हैं और मर्डर में भी कन्विक्शन हो चुका है और ये दोनों नोटरियस क्रिमिनल है। गुजरात के अमरेली के धारी तालुका के चलाला गांव में श्री जलाराम जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। धारी तालुका के चलाला गांव में जलाराम जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। चलाला में संत शिरोमणि रघुवंशी समाज के आराध्य देव जलाराम बापा की आज 225वीं जयंती रही। इस मौके पर भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें ढोल नगाड़े और डीजे के ताल पर झूमते नाचते हुए श्रद्धालु नजर आए। रघुवंशी समाज द्वारा आयोजित धार्मिक यात्रा के साथ साथ महाप्रसाद समेत के आयोजन भी किए गए। आज रोज जलाराम बापानी 225મી जन्म जयंती निमित्ते जलाला लोहाणा महाजन, जलाला युवक मंडल ने समस्त गाम सहित आज बापानी वर्णांगी मूळीमानी जग्यामांथी નીકળી ત્યાં પૂજ્ય દાન મહારાજની જગ્યાના महंत महाराज पूज्य વલકુ બાપુએ આશીર્વચન પાઠવા અને વર્ણાંગીને પ્રસ્થાન કરાવી અત્યારે જલાલાની દાન બાપુની જગ્યામાં થઈ, જલાલા મેઇન બજાર થઈ, પોલીસ સ્ટેશન પાસે થઈ અને અત્યારે ગઢિયા શેરીમાં વર્ણાંગી ગઈ છે અને ઉત્સાહપૂર્વક બધાને આનંદ છે। જલારામ બાપાનો પ્રસંગ હોય, અમારા ઘરનો પ્રસંગ હોય, આખા ચલાલાનો પ્રસંગ હોય, એ રીતે અમે ઉજવવા માંગીએ છીએ અને બધાનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।